Hello, hello. Hello. Good morning, guys. Is the sound clear? Give me confirmation in the chat box. Hello, check. Mic check. Steno result out. Students got selected. Hello, hello. आई होप ये सब आवाज़ें आपको आ रही है. चलिए, इट्स अ वेरी बिग सेलिब्रेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. बहुत लोगों का आज रिजल्ट हो गया है. स्टेनो का रिजल्ट आया है, लाइक यू ऑल नो. बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं भी हुआ है. ठीक है. सो दोनों ही तरफ से ये हर साल का कहानी है. जब भी रिज़ल्ट आता है, कुछ लोग खुशियाँ मनाते हैं एंड कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा उदास होते हैं. इस बार तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा चली गई है. तो अब आपको रियलिटी पता चल गई है, कितना मेहनत करना है आपको ये भी पता चल गया है. अब ये जो रिज़ल्ट आया है, इसमें बहुत सारे लोग का स्किल टेस्ट भी नहीं निकला होगा. आपको शायद लग रहा होगा आपके कट ऑफ के मार्क्स तो बढ़िया थे, लेकिन आपका स्किल टेस्ट भी दिक्कत देता है. तो अब दिक्कत कहाँ है ये आपको देखना है. और सिंस यू आर राइट नाउ इन दिस लाइव बैच ऑफ स्टेनो स्कूल, तो आपको यहाँ पर डिक्टेशन लिखना है. ठीक है. लिखो, ज़ोरदार लिखो, पढ़ो. जब तक नहीं अपने मंजिल पे पहुँचते हो तब तक आपको सतत प्रयास करते रहना पड़ेगा. कोई और चारा है क्या? नहीं है ना. बस मेहनत करते रहो, फिर पढ़ते रहो. ठीक है. चलिए, डिक्टेशन अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं. सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास में. चलिए, पहले हम डिक्टेशन लेंगे. क्लास का जो मेन एजेंडा है उसके बाद में हम थोड़ा सा लास्ट में कुछ देर बात भी करेंगे आप लोगों से. तो उसके हिसाब से हम क्लास को लेते हैं, बिकॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ यहाँ पे आप लोग डिक्टेशन लेने आए हो. बाकी जिस स्टूडेंट्स को रेगुलर बेसिस पे मुझसे बातचीत करना, यू वांट टू बी स्टे इन टच, यू वांट टू get the guidance and all other things, definitely you can join any of the batches if you are interested. Okay, चलो, लेट अस स्टार्ट गाइस. पहले जो मेन क्लास का काम है हम वो पहले डिक्टेशन लेंगे, उसके बाद में सभी बातचीत करेंगे. ठीक है. चलो, गेट रेडी एवरीवन. आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं कैलाश चंद्रा, जो एक आपकी मैगजीन है, वॉल्यूम नंबर 5, सॉरी वॉल्यूम नंबर 1 का ट्रांसक्रिप्शन नंबर 5. ठीक है. सभी लोग रेडी हो जाइए डिक्टेशन के लिए. ये आपका ट्रांसक्रिप्शन नंबर 5 है. इसका सेम एग्जैक्ट पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लास ख़त्म होने के बाद में मिल जाएगा. ओके. तो अगर आपको अपने डिक्टेशंस चेक करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं. बाकी अगर आप चाहते हैं अपना टाइम थोड़ा बचाएं, समय को बचाकर उसको और प्रैक्टिस में लगाएं, तो आप एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हो अपने डिक्टेशंस को चेक करने के लिए और हाई लेवल की प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. मोर अबाउट दिस एट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. लेट अस बिगिन विद द डिक्टेशन गाइज. प्लीज़ बी रेडी. Steno School, Kailash Chandra Dictation, Transcription number 5, Volume 1 at 85 words per minute, 3, 2, 1, start. The Industrial Policy Resolution of 1948 was good so far as it went, but unfortunately, the spirit of it could not be understood or appreciated by the common man in this country. So, a new orientation of this policy was given, and the Honorable Prime Minister, after his return from China, publicly declared that future policy of the country, or rather the future pattern of society, will be the socialistic pattern. That was further emphasized by the resolution passed at the Avdi session of the Congress,
and later reiterated by Shri Devar, President of the Indian National Congress. I am very glad to say that the spirit of it has been caught by the nation today. If I may say so, the nation has taken up the challenge for securing the socialist pattern of society. It behoves all sections, both inside this house as well as outside, without having mutual recriminations, to act and propagate in a sincere manner and establish the socialistic pattern of society indicated by the statements of the great leaders of our country. It may be relevant and pertinent if I refer to a few sections from the memorandum presented on the 4th June 1939 by our Prime Minister, who was the chairman of the All India Planning Committee, which came into existence when there was provincial autonomy in the provinces. On pages 39 and 40 of that report, he stated, "It is clear that the drawing up of a comprehensive national plan becomes clearly an academic exercise with no relation to reality unless the planning authority or those to whom it is responsible are in a position to give effect to the plan. If this authority is powerless or circumscribed or restricted and has limited activities, it cannot plan. An essential prerequisite for planning is thus complete freedom and independence for the country and removal of all outside control. This implies that the country possesses in itself full sovereign authority to take any measures, adopt any policy, and form any relations with other countries as may seem best to its governing authority in the interests of the country and its people. National independence is thus an indispensable preliminary for taking all the steps that might be found necessary for carrying out the 5-year plan in all its various aspects throughout the whole country. At the present moment, it is clear that not only have we in India no national independence, but we are hedged in and obstructed by numerous restrictions, limitations, safeguards, and reservations which block the path to planning and progress. Our plan for national development must, therefore, be drawn up for a free and independent India. Thanks to the sacrifices made by millions of our countrymen and countrywomen under the leadership of the Father of Nation, Mahatma Gandhi, we have today secured complete sovereign political independence at a time when
the nations of the world were engaged in the bitterest struggle, using all the weapons of destruction. If, therefore, we have secured political independence during the period of a quarter of a century, it should not be difficult, especially when we are today masters in our own country, to secure a socialist pattern of society, as has already been indicated. But it requires the assistance, the propaganda, the active work of all those who are interested in this. I am sure, so long as my honorable friends, the minister, the deputy minister, and the other minister who represent the Commerce and Industry Ministry, can give us an assurance that the capitalist pattern would be avoided, some of us who believe in a cent per cent socialist democracy give an undertaking that certainly totalitarian policy will not be introduced in this country, because we have believed all along during the fight that we have given to the British government when we secured political independence, that we shall try to maintain democracy undiluted and a socialist democracy at that. I am absolutely certain that in this country of ours, liberty of thought, liberty of speech, and liberty of action will be guaranteed to every citizen to express his views in the manner he pleases. I therefore assure my honorable friend that so long as we do not, in the garb of a socialistic pattern, support a capitalist system, India will stand 100% for a socialist democracy. Now, luckily for us, the fundamental rights of the Constitution have declared that a citizen would be assured of many of the social amenities which will give reasonable comfort from the womb to the grave. But mere enunciation, as I have said many times, will not satisfy the common man unless the saying is put into effect. I am absolutely certain, therefore, that so long as there is determination on the part of our countrymen, we will be in a position to secure a socialist pattern of society. It is not even possible to draw up a plan on any other basis. Full stop. Alright guys, this was your dictation. आई होप आप लोगों ने डिक्टेशन लिखा. आज थोड़ी सी स्पीड और ज़्यादा थी, अराउंड 90 वर्ड्स पर मिनट के आसपास स्पीड थी. ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग का डिस्कशन कर लेते हैं अब. हाँ, नॉट सिलेक्टेड, ओके. यस, 151 आई अंडरस्टैंड कि कंपटीशन आप लोग का बढ़ता जा रहा है. 152 155 तक भी नॉट सिलेक्टेड. सो किस तरह से यहाँ पर स्किल टेस्ट में ये किया है. स्किल टेस्ट में आई थिंक जिसके 155 मार्क्स हैं, आप लोग का तो स्किल टेस्ट अच्छा गया ही होगा. स्किल टेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग के केस में. बट कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग. इतनी अच्छी वैकेंसी थी,
इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा कट ऑफ लेकर जाना, मतलब चलिए, आपके पास अभी भी कुछ दिन हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, तो आई जस्ट रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू के कोई भी आप कसर मत छोड़ना। CBT इज़ ऑफ आई से, अगर आप वेटेज देखें तो CBT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, CBT में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं आपके तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मेक श्योर कि नेक्स्ट जो कुछ दिन आपके पास में बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम आने से पहले, एक रफली यू कैन से 20 to 25 डेज़ जो आपके पास में है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। मतलब 1 महीना भी मान लो, जो भी समय बचा है, तो हमेशा ये जो लास्ट का समय है इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। कोई टॉपिक रह गया है जो बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, उसके अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं, 152 मार्क्स जो बोलो ना CBT में होता है, स्किल टेस्ट के मार्क्स नहीं आते। स्किल टेस्ट में आप बस क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई होते हो, मतलब परसेंटेज, जैसे एक परसेंटेज ऑफ एरर है, अगर आपने रिजल्ट देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है एकदम लाइन टॉप में लाइन लिखी हुई है, इतने परसेंटेज अगर आपके मार्क्स मतलब इतने परसेंटेज से कम मिस्टेक हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई, मतलब स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाओगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में बताइए। सिलेक्टेड हो गया तो फिर आप पार्टी करो यार, बढ़िया। फ़िलहाल तो जो होगा रूल सबके लिए होगा ना, आपके लिए मोबाइल थोड़ी आपका बोलेंगे कि भाई आपका मोबाइल लाओ, हमारे पास रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो है सबके लिए होगा वो आपके लिए भी होगा ये आप इसकी चिंता ना करो, ठीक है। चलो, जो सिलेक्ट हो गए हैं आप लोग के बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर मन चाहिए पोस्ट मिल गई है तो दोबारा से आप लोग एग्ज़ाम देकर इतना ज़्यादा इसमें मेहनत मत करो, थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो, मज़ा मस्ती करो। एग्ज़ाम के आपके सिलेक्शन मिल गया है तो बाकी अगर आपको मन चाह नहीं मिला, दोबारा से तैयारी में लग जाओ सभी लोग। जो स्पीड बैच के भी स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। बहुत ही जल्द अगले 3 से 4 महीने में यही सेम सिनेरियो फिर से रिपीट होने वाला है। यू हैव टू डिसाइड कि आप पछताओगे कि यार और पढ़ लिया होता, या फिर आप खुशी मनाओगे चलो यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मतलब अपना बेस्ट दिया है मैंने, ठीक है। चलो, नाउ पोस्टिंग कहाँ पर होगी वो तो डिपेंड, वो चीज़ हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट पोस्टिंग कहाँ होगी। वो डिपेंड करता है कि आपका जो वो डिपार्टमेंट है वो किस बेसिस पे पोस्टिंग लेता है। कभी कभी कहीं कहीं रैंक के बेसिस पे लेते हैं कि आपका रैंक क्या है, कहीं कहीं पे आपको रैंडम एलोकेशन होता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको अब थोड़े धीरे धीरे समय के साथ साथ पता चलेंगी, ठीक है। चलो, ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोग अपने डिक्टेशंस भी लिखते जा रहे हो, ठीक है। आपको अगेन स्किल टेस्ट में बहुत कम समय मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सो स्किल टेस्ट को अगर आप ग्रेड C को इस बार एम कर रहे हो तो स्किल टेस्ट अभी ही लेकर चलो साथ में। और स्किल टेस्ट भी अगर आपका धीरे धीरे, अभी तो टाइम है स्किल टेस्ट को, तो आप लोग CBT में अपना पूरा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। लाइक करना इस सेशन को अगर आपने डिक्टेशन लिख लिया है तो, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। एंड इफ़ यू आर एन इंग्लिश स्टेनोग्राफर, यू हैव टू टेक दिस स्पीड बैच, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। ऑफ कोर्स SSC की तरफ से नहीं है, लेकिन मैं आपके करियर के लिए बोल रहा हूँ, दैट इज़ मैंडेटरी कि जब आप हाई स्पीड पर डिक्टेशन लिखोगे आपको एक नेक्स्ट लेवल अनलॉक होगा जो आपको पता भी नहीं था कि ये एक टफ लेवल ऑफ कंपटीशन है, ठीक है। ओके, फीलिंग बेटर, ओके मानसी, वेलकम बैक टू द क्लास। चलो, कल से ये आज फ्राइडे था, कल भी हम शायद से क्लास करेंगे अगर हो पाई तो शाम को यहाँ पर, और एल्स इसके बाद में हम स्पीड बैच अपनी रेगुलर बेसिस पे गूगल मीट पे करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अपना बेस्ट दो, एग्जाम के लिए पढ़ाई करो अच्छे से और मेहनत करते रहो। मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चलो।